कौआ हकनी मिथिलांचलक एकटा लोकप्रिय लोकनाट्य अछि जे सोनागढ़क राजासँ सम्बन्धित कथा अछि जिनका 6टा रानी छलखिन मुदा सब बाँझ। ओ अपन भविष्यक प्रति चिन्तातुर भऽ काशीसँ पंडित बजाओल जे राजाके गरीब कन्यासँ विवाह करबाक सुझाव दैत छथि। ओ एक निर्धनक बेटीसँ विवाह रचा लैत छथि। किछु समयक अन्तरालक पश्चात नवकी रानी गर्भवती भऽ जाइत अछि। डगरीनक अभावमे 6 रानी डगरीनक काज सम्हारि लैत छै। छोटकी रानीक सोतिन सब नवजात शिशुकेँ चोरा कऽ मटकोरबामे फेंक अबैत अछि। राजाक हर्ष विषादमे परिवर्तित भऽ जाइत अछि। 6 रानीक सुझाव पर ओकरा 12 बीघाक फुलबाड़ीमे कौआ उड़ेबाक काज दऽ देल जाइत अछि। मटकोरबामे फेंकल बच्चाके कुम्हार दंपति पालन पोषण करैत अछि। ओ स्नेह सियान भऽ स्कूल जाय लगैत अछि। ओ कुम्हारसँ कहैत अछि जे हमरा कारी घोड़ा आ लाल लगाम बना दिअ। एक दिन ओ अपन घोड़ाक संग पोखरि पर जाइत अछि जतय 6 रानी स्नान कऽ रहल छलीह। ओ अपन घोड़ाकेँ ओतय पानि पिएबाक हेतु लऽ जाइत अछि। रानी सब घोड़ाकेँ देखि कऽ कहैत अछि जे माटिक घोड़ा कतौ पानि पीबै। रानी सब कहैत छथिन। एहि पर ओ उत्तर दैत अछि जे आदमी कतौ ईंट पत्थर बिआल अछि। ओकर उत्तर सुनि 6 रानी अवाक भऽ जाइत छथि जे आब हमरा सब षड्यंत्रक भंडाफोड़ भऽ जायत। ओ सब राजासँ शिकायत करैत अछि जे कुम्हारक बेटा हमरा लोकनिकेँ गारि पढ़लक अछि। एहि पर राजा क्रोधित भऽ ओ बालकक शिरच्छेदनक आदेश दैत छथि। शिरच्छेदनक पश्चात ओ बच्चा ओहि फुलबाड़ीमे एक सुन्दर फूल बनि जाइत अछि। फूलक रूप सुषमा पर आसीत भऽ 6 रानी ओकरा तोड़बाक उपक्रम करैत अछि किन्तु फूल शीघ्रे आकाश लागि जाइत अछि। राजाकेँ जखन एकर सूचना भेटैत अछि तखन वास्तविकताक उद्घाटन एक साधु आबि स्पष्ट करैत छथि। एहि घटनासँ अप्रसन्न भऽ राजा 6 रानीकेँ प्राणदंडक सजा दैत छथि। राजा लपकि कऽ अपन सोन सन बेटाकेँ अपन कोरामे उठा लैत छथि। ई मिथिलाक लोककथा पर आधारित लोकनाट्य अछि।